हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे ऑन डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। तो अभी हमें डेरिवेटिव कैसे निकालना है और फंक्शन क्या है वो पढ़ना है। व्हाट इज ए फंक्शन? जब कोई दो क्वांटिटी हमारे पास है, if we have two quantities, suppose say x and y, and one quantity suppose y is dependent upon another quantity x। जब इसका मतलब क्या है, if x will change, जब x का वैल्यू चेंज होगा y also will change, means y का वैल्यू चेंज होगा। करेक्ट? सपोज the amount of change in value of x is if delta x, the amount of change in value of y will be delta y। तो in this case हम बोलेंगे y is dependent upon x और y is a function of x। तो जब बोलेंगे y फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये हो रहा है कि x का वैल्यू जब चेंज होगा y का वैल्यू भी चेंज होगा। Now let us find what is derivative. Derivative is the instantaneous rate of change of a function with respect to its variable. Here function is y and it is dependent upon x, or its variable is x. When x will vary, y will vary. That means y जब x के ऊपर डिपेंडेंट है, हम बोलेंगे y is function of x, y is a function of x। तो x इज वेरिएबल हियर, x अपना जब चेंज होते रहेगा y का वैल्यू चेंज होते रहेगा। करेक्ट? तो इन दैट केस तो हम जब निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन y, दैट इज डेल्टा y with respect to delta x, and our limit delta x tends to 0, तो ये बन जाएगा dy by dx, that is derivative of y with respect to x। अभी मान लीजिए y is a function or any quantity that is depending upon another quantity or function x। ये कैसे वैरी कर रहा है, डिपेंडेंट है। सपोज दिस इज ए कर्व, तो इस मैनर से y वैरी कर रहा है जब x अपना चेंज होते जा रहा है। सपोज एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x1, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y1 और हमारा एक पॉइंट हो गया a। अनदर पॉइंट यहाँ पर b है जहां पर x का वैल्यू x2 है और x1 से x2 जो चेंज हुआ दैट इज डेल्टा x। तो हम ये कह पा रहे हैं, नाउ वी कैन से x2 इज x1 जो वैल्यू था प्लस जो चेंज हुआ दैट इज डेल्टा x। तो x2 का वैल्यू हो गया x1 प्लस डेल्टा x। एट दिस पॉइंट ऑफ x, जब x इज x2, y का कुछ वैल्यू है दैट से इट इज y2। तो पहले y1 था, अभी y2 हो गया। तो this is our delta x and this is our delta y, this is our delta y, this is our delta x। और y2 हो गया, पहले जो था y1 और y डेल्टा y चेंज हुआ, दैट मींस y2 became y1 प्लस डेल्टा y। तो अभी हमारे पास दो पॉइंट हो गया a b, तो हम इसको यही बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन y by rate of change in x is the slope of the line joining a and b। If this is angle theta, then tan theta is equal to slope of the line AB। Slope of the line AB is now tan theta, that is rate of change of this
function y. Rate of change with respect to x is equal to delta y by delta x. तो अभी डेल्टा y by डेल्टा x क्या बन गया हमारे पास tan थीटा और स्लोप ऑफ द लाइन बना। लेकिन हम इसको डेरिवेटिव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कीप फ्रॉम बिटवीन ए एंड बी जो रेट है तो एट ए डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट रेट है, दैट मीन्स थीटा इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंटरवल। तो ये ए बी को हम छोटा करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर लेना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट चेंज। तो एग्जैक्ट चेंज के लिए डेल्टा एक्स को जितना ही छोटा ले सकते हैं, तो इन दैट केस वी विल गेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो डेल्टा एक्स को छोटा करना मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो जब इस टाइप का सिचुएशन आएगा तो इन दैट सिचुएशन सपोज हम यहाँ पर उसका रेट निकालना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन यहाँ पर एट दिस पोजिशन वी ड्रॉ ए tangent, and this tangent it will make some angle with this x-axis, suppose it is theta, then the new suppose it is theta 1, then slope will be tan theta 1. So this will be the derivative of y with respect to x और dy by dx। तो इसका मतलब ये हो गया हम dy by dx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we have to find the change in y with respect to x where change in x is very negligible or delta x tends to 0. This is the definition of derivative of any quantity। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ y निकाल रहे हैं। डेरिवेटिव y with respect to x it became change in y delta y by delta x, and delta x limit value change delta x tends to 0, very small, so that becomes instantaneous rate of change of y with respect to x or derivative of y with respect to x. Now to find out derivative of certain algebraic functions like x to the power n and all, some logarithmic functions like log x, e to the power x, a to the power x, and other some trigonometric functions like sin x, cos x, tan x and all। तो कुछ यूजफुल रिजल्ट्स को हमें ध्यान रखना है। तो रिजल्ट नंबर 1, इफ x to the power n minus a to the power n by x minus a where x tends to a, that means x to the power n by x to the power n by x where x tends to 0 or x to the power n minus a to the power n by x minus a, that is when x tends to a, that is x minus a tends to 0, x minus a tends to 0। तो in that case this value becomes n x to the power n minus 1। In that case it becomes n x to the power n minus 1, or we can say x to the power n by x limit x tends to 0 is n x to the power n minus 1, and sin x by x
when x tends to 0, or sin x minus a by x minus a when x minus a tends to 0 becomes 1, like it becomes sin 0 plus by 0 plus, and sin 0 plus is very small, hence it will become 0 plus by 0 plus, then it will become this divided by the same number, it is 1. Similar manner, we can say tan x by x when x tends to 0 also 1. Then now we have sin x by x, limit x tends to 0 is 1. We have now x to the power n, x to the power n by x, and x tends to 0 is n x to the power n minus 1. Next is sin x by x, x tends to 0 is 1. Tan x by x, x tends to 0 is 1. And another results are a to the power x minus 1 by x when x tends to 0 is log e a. Log base e a. Another result is e to the power x minus 1 by x with when x tends to 0 is 1, and another value is log e 1 plus x by x when x tends to 0 is 1. It is now 1. Using these useful results, we can say a function is y is equal to x to the power n, then dy by dx is equal to n x to the power n minus 1. If function is e to the power x, e to the power x, then dy by dx is equal to same e to the power x. Now, if y is equal to a to the power x, dy by dx is equal to a to the power x जो वैल्यू है, then log e a, log e a, log e a. Next, if y is equal to log e x, dy by dx will be 1 by x. Next is if it is log x again base a, then dy by dx will be 1 by x तो रहेगा ही 1 by x divided by it will be log e a, log e a. Now with this we had a differentiation of logarithm quantities. Now let us study derivative of trigonometric functions. If y is equal to sin x, if y is equal to sin x, then dy dx will be cos x. It will be cos x. If y is equal to cos x, dy by dt will be negative of sin x.
negative of sin x. If y is equal to tan x, dy dx will be sec square x. If y is equal to cot x, then dy dx will be negative of cos square x. If y is equal to secant x or sec x, then dy dx will be sec x into tan x. If y is equal to cosec x, if y is equal to cosec x, then dy by dx will be cosec x into cot x negative. Here 1 by sin x is equal to cosec x and 1 by cos x is equal to sec x. 1 by tan x is equal to cot x. With this, we had if y is equal to sin x, then dy dx is equal to cos x. If y is equal to cos x, dy by dx is equal to minus sin x. If y is equal to tan x, dy by dx is equal to sec square x. If y is equal to cot x, dy by dx is equal to minus cos square x. If y is equal to sec x, dy by dx is equal to sec x into tan x. If y is equal to cosec x, dy by dx is equal to minus of cosec x into cot x. With this, we had derivative of trigonometry functions. Now you can understand what is the physical meaning of this derivative. Derivative अभी हमने निकाला था dy by dx, तो ये था change in y by change in x, change in y, change in value of y by change in value of x with change in value of x is very small. Then it says derivative is the instantaneous rate of change of the function, instantaneous rate of change of the function with respect to the variable, with respect to the variable here x. Rate of change of the function suppose y with respect to variable x, that is, it is equivalent to slope of the tangent line. It is slope of the tangent line drawn at that instant point on the curve. हमारे पास था y एक्स वाई कर्व और कर्व मान लीजिए इस तरह का है, तो इस पॉइंट में निकालना है तो विल ड्रॉ ए टेंजेंट, और टेंजेंट इफ इट इज थीटा देन स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज tan थीटा. Tan theta is slope of the tangent at this point. Suppose it is when x is equal to x1. That means if
This says it is derivative of function y by dx at that instant of point of time. That means in that case x का पहला वैल्यू x1 है, फिर x बन जाएगा x2 और जो डेल्टा x होगा दैट इज x2 माइनस x1 इतना छोटा होगा कि वो इट टेंड्स टू 0। तो दैट सिचुएशन में तो जो स्लोप निकलेगा मतलब कुछ डेल्टा x इस टाइप का होगा, डेल्टा y इस टाइप का होगा, डेल्टा y दिस इज डेल्टा x। तो डेल्टा x इतना छोटा होगा कि डेल्टा y भी बहुत छोटा होगा और दोनों की जो रेशियो है वो बन जाएगा स्लोप और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। Right. Now we'll have certain theorems of differentiation. Suppose y is constant, it is not changing, then dy by dx will be 0. Second is if y is a function of another two functions, they are added. That means u is a function of x and v is a function of x. मतलब u चेंज होगा जब x चेंज होगा और x जब चेंज होगा v भी चेंज होगा। In that case, if two functions are added and that gives y, so we can find out dy by dx or derivative of dy by dx होगा। In this case, derivative of u with respect to x plus derivative of v with respect to x, and once u and v are added, their derivative also will be added. If u is u, if y is u minus v, then dy by dx will be du by dx minus dv by dx. That means if y is equal to u minus v, dy by dx will be du by dx minus dv by dx। करेक्ट। तो जब ये प्लस होगा ये प्लस हो जाएगा, जब ये माइनस होगा ये माइनस हो जाएगा। नाउ अनदर theorem says if y is a product of two other functions and u, suppose it is y is product of u and v, u is function of x and v also function of x, in that case dy by dx will be u dv by dx plus v du by dx। Suppose y, if y is a division of two other functions, that means y is called u by v, then dy by dx will be v du by dx minus u dv by dx divided whole divided by v square whole divided by v square. This is the product rule and this is division rule. This you can say is our product rule. This will you can say division rule. Okay, with this differentiation will be helpful to our it will be helpful to solve physics problems.